पार्टी की शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड और पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसने और यहाँ पे आए हुए पर्यवेक्षक राजनाथ जी, भूपेंद्र यादव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और राज्य की सभापति मनमोहन सामल जी और मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी को कृतज्ञता देते हैं कि इतना बड़ा जिम्मेदारी हम पे दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के टाइम पे उड़िया लोगों को जो बोले थे, उड़िया अस्मिता के लिए, जगन्नाथ ऐतिह्य के लिए, जगन्नाथ मंदिर के लिए जो बोल के गए थे उसको एक एक करके कल से काम शुरू करेंगे। हमारी सरकार गरीब के लिए काम करेगी, युवक, महिला, कृषक उनकी विकास करेगी और महिला सुरक्षा के लिए एक नया दिगंत खड़ी करेगी। आपने तो 3-4 बार इलेक्शन लड़े थे, हारे थे, इस बार जीते थे और सोचे थे कभी डिप्टी सीएम होने के लिए? ये पार्टी ही ऐसी पार्टी है, हम पे जो साधारण कार्यकर्ता है वो असाधारण दायित्व में आ जाते हैं। मुझे तो कभी भी नहीं समझ में थी कि मैं भी ये इतना बड़े जिम्मेदारी आ सकती है, लेकिन पार्टी ने जो दायित्व दिए हैं उसको निभाने के लिए प्रभु जगन्नाथ की कृपा रहेगी और मां मंगला की भी कृपा रहेगी, ये मेरी उम्मीद है। See, first and foremost, I would like to thank the Bharatiya Janata Party Central Parliamentary Board along with the Honorable Prime Minister for having put their trust and faith in me and appointing me one of the Deputy Chief Ministers. All I would like to say that the agenda of development Viksit Bharat agenda को लेके जो हम लोग सत्ता में आए हैं उसी सत्ता को लेके लोगों के बीच जाएंगे। See, BJP being a cadre-based party looks into all the aspects, and from the organizational point of view, the state, the formation of the government is going to have all-round representation from all society. But in the Western Odisha, we had 2 central ministers there and 1 deputy CM there. So how Western Odisha votes? Why do you forget that the state also has the President of India? So let's not take it otherwise. But Narendra Modi ji has always said in his speeches that Odisha is going to be the #1 state in the coming 5 years. You have a lot of experience, but the opposition party is a very strong opposition party. 51 BJD MLA and 14 Congress. Yes, it is going to be a testing time for us, but we are confident that we will be able to take them on. Any selection of this speaker? Look, first, one step at a time. Right now, the speaker will be decided by the MLAs after the oath is administered. The post of speaker is filled up inside the house, not outside. Any ministers will go first? Nothing. You see, the only decision which has been taken as of now is in front of you. And whatever other decisions will be taken, you will come to know by tomorrow. So BJP will form the government for first time. How it serves to the people of Odisha? All I would like to say, tomorrow the BJP is going to be taking oath for the first time, in the Chief Minister, BJP Chief Minister is going to be taking oath for the first time along with the 2 Deputy Chief Ministers, and the first time thereafter you'll